Is the cloudburst fury in Uttarakhand and the rescue operations that are racing against time. Uttarakhand's picturesque Dharali village, en route to Gangotri, is reeling under devastation after a cloudburst triggered flash floods that swept through the region. Uttarakhand's Chief Minister Pushkar Singh Dhami conducted an aerial survey and visited the ground zero today to take stock of the situation. Rescue operations are underway as several people remain missing. The Chief Minister, apart from conducting the aerial survey, also interacted with rescue personnel on the ground and directed officials to expedite relief operations. 2 helicopters have been deployed to ferry food and essentials, while the Indian Air Force's Chinook is airlifting heavy machinery for clearing debris and road repair. The rescue operations are being carried out by teams from the Army, the ITBP, and the SDRF, or the State Disaster Response Force. As per the Chief Minister, Pushkar Singh Dhami, 70 to 80 people have been rescued so far. That number has gone up significantly in the recent hours. Officials confirmed that 4 people have died so far. 1 body was pulled out from the rubble today as search operations resumed despite persistent rain. Prime Minister Narendra Modi also spoke to Uttarakhand's Chief Minister Pushkar Singh Dhami and assured full support from the centre. The Indian Army has placed its Mi-17 and Chinook helicopters on standby for further rescue once weather conditions improve. A team of 150 soldiers led by Colonel Harshavardhan of 14 Rajasthan Rifles, Rajput Rifles, is spearheading operations despite their own base being affected. And now we have Mohsen Shahidi, DIG of the NDRF, the National Disaster Response Force, now joining us on the broadcast. Mohsen Shahidi, thank you so much for taking time out to be with us here on News 9. Talk to us, what is the latest you can tell us as far as the rescue operations in Dharali are concerned? Thank you. As you know, the tragedy that unfolded yesterday, we had in fact 3 flash floods in 3 different areas, Dharali, then Harshil and Suki Top. In the main village where the impact has been the maximum, the 4 people are reported from the media, by the media, to be dead, and more than 50 are reported missing. In Harshil also, the army camp has been affected and about 11 army personnel are reported missing. So this is the situation that we are faced with, and NDRF 3 teams have been moved yesterday only on receipt of information regarding the incident. Due to the bad weather and the landslide, which has been continuous on the roads on the highway, the movement has been slow. At places, the roads have been washed out. That is under repair. It's being, constructed, and then we expect that the teams will, sooner they will be able to reach there and join the operation. However, a small team has been airlifted today, and more elements are at the airport at Dehradun for airlift by the Indian Air Force. Mohsen Shahidi, I wanted to ask this question. That area where the cloudburst and the flash floods took place is considered a high-risk area, even for rescue operations, isn't it? Yes, definitely. Any incident in the hills is a challenging task, and considering the flash flood, the impact on the village, where the shops, the homes, the commercial establishments were just razed to the ground.
This is area. This disaster is spread over a large area with almost 5 to 7 feet of muck. So that is the challenge that the agencies, response agencies face in the conducting of the relief operations. Also, Mohsin Shahidi, the rain has not stopped. The rain has continued. How much of a problem it is when it comes to conducting rescue operations at this stage, at the moment, and more importantly, how much time is there really, with you to complete rescue operations before, and try to save as many people as possible? Definitely, the rains do have an impact on the rescue operations, but it will be going on. There is no stopping because the time is essence, and the aim is at present to identify the priority areas where there could be some lives to get onto that issues, the areas, and of course this whole relief work would definitely take some time because it is a large area. Okay, talk to us. This is a multi-agency operation. There's the army involved, the ITBP is involved, and the state disaster response force involved. In fact, the army has a couple of helicopters on standby, including the Chinook, to get everything from relief material to heavy machinery to clear the debris as well. Can you give us the latest update on that front? How many heavy machinery has arrived to help clear the debris, and how much of relief material are being able to be transported to Dharali and nearby? What I am told is, the heavy machinery is in process of being transported by road. Of course, there is some difficulty because at places it is broken. But whatever resource is available with the army, the ITBP at that location by the local administration, that is being used to good effect. The teams also, as and when they are able to be airlifted, we have got some special equipments. We have got cadaver dogs which can be utilized to identify dead bodies beneath the rubble. So all these will be put to maximum use. And there is a good coordinated effort on ground. Good coordinated effort on ground. We also understand that 150 meters of road was washed away in Bhatwari, and that blocked the route to the disaster site. So right now, is the disaster site not reachable by road and only by air? That's true. The disaster site by road it is impacted, and the efforts are on to bridge those gaps as soon as possible, and that is why at a few places our men had to take the terrain, move on road, leave the vehicle, and carry the heavy equipments. So this is the present situation. Right, can you give us a timeline, in terms of how long do you think it's going to take to bring things back to normalcy in Dharali and Sukhi and Harsil as well? How long do you see the rescue operations and relief operations continuing at this stage? It would be difficult to say because there are so many issues, and once the team reaches, the heavy machineries are also there in place. Naturally, the present stage of the relief work would be expedited, but definitely seeing the extent of the damage, it would definitely take some time. And more importantly, Mohsin Shahidi, I wanted to ask you, this was a disaster in many ways waiting to happen. Dharali was meant to be evacuated. Cloudbursts happen here in the season all the time. You can't stop cloudbursts from happening. So in that sense, talk to us, in your own experience, you've seen cloudbursts, you've seen flash floods. How bad is this situation right now? To me, it seems like a replay of what we saw in Chamoli. I was there, in 2021. It was a huge disaster, and then last year only we had a Wayanad landslide. So it seems to be a replay of those incidents. So definitely it is a larger scale event, and whatever exposure we have, the experience, I'm sure all the other agencies who have been involved, because earlier also in Uttarkashi there have been regular landslides. So all these experiences is being put to good effect, and the resources are being mobilized. There is good gelling. I'm sure we will come out well and as quickly as possible. And what is the need of the hour, Mohsin Shahidi, at this stage? What is your top priority for the next few hours in terms of your own work in the larger scheme of the relief and rescue operations? Definitely, the important aspect is to take out the people who could be impacted in the vicinity, maybe by a secondary flash flood. So that is why a lot of evacuation has been taken in the vicinity areas, and that is important. The second thing is to prioritize if there is any live rescue
any person who is stuck up and needs to be attended. And third, of course, would be the retrieval of the dead bodies. So all these are important factors, and the agencies there on ground are seized of the matter and they are attending it. We will leave it at that. Monsoon, the DIG of the NDRF. Thank you so much for joining us here on the broadcast and giving us updated on all the latest as far as the relief and rescue operations in Uttarakhand, in Uttarkashi is concerned. Let's now listen to what Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami had to say. पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। कुछ को वहां एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। Let's also take a look at these latest visuals of the relief and rescue operations coming to you straight from Uttarakhand. It's a massive rescue effort that's underway despite inclement weather conditions. Bear in mind, rains are continuing to persist. That's the alert that's been given by the Indian Met Department. Rains are set to continue for the next few days, and they are seriously hampering the relief and rescue efforts. मल्ला भटवाड़ी से हैं हम। क्या नाम है आपका? शुक्रलाल आर्य। ये अभी रोड कोलैप्स हो गई है, रोड टूट गई, क्या हुआ है पूरा मामला? ये रोड है, नदी का जल स्तर बढ़ रहा, जो आपदा आई ना ऊपर से केदार गंगा धराली में जो आपदा आई उसका जल स्तर बढ़ा और उसका खिंचाव से जो नीचे ध्वस्त हो गए। और BRO भी लगी हुई है, सुबह 4 बजे से कार्य प्रगति पे है। तो अभी परेशानी भी हो रही होगी आप लोगों को? परेशानी तो होगी सबको जब तक रोड नहीं खुली। तो कार्य प्रगति पे है, मशीन भी लगी हुई है यहाँ पर। BRO की टीम क्या कह रही, कब तक ठीक हो जाएगा ये? और आसमान ठीक होना चाहिए, वैसे तो मशीन आएगी तो 1-2 दिन में खुल जाएगी। ठीक हो जाएगा। हाँ। Visuals on your screens are of the road that has been blocked en route to Dharali village, en route to the disaster site. That is cut off road access for the relief and rescue efforts to the disaster site, and that's the reason why helicopters are being deployed, including the Chinook helicopter as well of the Indian Army. Bear in mind, so far 4 people have been confirmed dead and over 190 people have been reportedly rescued in the aftermath of the cloudburst that triggered flash floods in Uttarkashi's Dharali village. 150 meters of road has been washed away in Bhatwari, which has blocked the route to the disaster site. Let's also now listen to what the local residents had to say. इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। सर एक खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये कार्बन आया 1:30 पे आया, हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे,
कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। This is a ground report from Dharali. उत्तरकाशी के धराली गांव में पूरी त्रासदी हुई और हमने देखा कि किस तरह से बादल फटने के बाद पूरा जल बहाव आया, भूस्खलन हुआ और पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ ठीक मेरे पीछे आप ये तस्वीरें दे सकते हैं। इस वक्त मैं एनडीआरएफ के वॉर रूम में खड़ी हुई हूँ और वॉर रूम में यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो एक एक तस्वीर को मॉनिटर कर रही है और आकलन कर रही है। ग्राउंड पर भी एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं। इसके अलावा 3 जो टीमें हैं वो भी पहुंचने वाली हैं और लगातार जो है पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार पूरा ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन उसकी खास मॉनिटरिंग, क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन है एक तरीके से ये जो तमाम फोर्सेज है मिलकर कर रही हैं, जिसमें एनडीआरएफ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और यहाँ पर हम मॉनिटरिंग जो रूम है, यहाँ पर जो पूरा वॉर रूम में एक एक तस्वीर का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये जो सीधी तस्वीर है ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये धराली गांव की है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि कल 1:45 बजे के आसपास जब ये पूरी त्रासदी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, बुधवार सुबह रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बॉडी भी बरामद की गई है और उसकी भी पहचान की जा रही है। और 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और कल से लेकर अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और जो इंडियन आर्मी है उसके करीब 150 लोगों से ज्यादा जो जवान हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो तस्वीर है ये हर्षिल कैंप की, जो कि इंडियन आर्मी का हर्षिल कैंप है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि करीब 11 जो जवान हैं वो मिसिंग है और उनके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो इंडियन आर्मी की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है। Meanwhile, a major landslide has hit Nalupani about 20 kilometers before Uttarkashi, blocking the road with massive mountain debris. Multiple landslides have also occurred overnight on the Rishikesh-Uttarkashi route. While some stretches have been cleared, many remain closed. In Bhatwadi, a road collapsed and it completely cut off access, making it difficult for NDRF, SDRF and ITBP teams to reach Dharali for rescue efforts. Heavy rain, meanwhile, continues to batter Uttarakhand. My colleague Puneet gets us this ground report. उत्तरकाशी के धराली में जबरदस्त क्लाउडबर्स्ट हुआ है, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। जो मौसम विभाग ने है उसने चेतावनी जारी की है कि उत्तराखंड के 5 जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश होगी, कई जगह लैंडस्लाइड होगा। इस वक्त हम उत्तरकाशी से 20 किलोमीटर पहले नालूपानी इलाके में खड़े हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले लैंडस्लाइड हुआ। ये जो पहाड़ है ये अचानक भरभरा कर हमारी गाड़ी से बिल्कुल 20 फीट पहले यहाँ पर पूरे बीच सड़क पर आकर के गिरा। बड़े बड़े पत्थर हैं, होल्डर हैं ये, और ऋषिकेश से उत्तरकाशी के इस रास्ते के बीच में कम से कम 7 से 8 जगह ऐसी आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो लगातार नीचे आ रहे हैं, जो काफी ज्यादा खतरनाक है, गाड़ियों पर गिर सकते हैं। और इस तरीके से जो लैंडस्लाइड है वो लगातार उत्तरकाशी के अलग अलग इलाकों में फिलहाल हो रहे हैं। आलम यह है कि कई रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। भटवाड़ी के पास जो लगभग 100 मीटर का एरिया है वो भी पूरी तरीके से बह गया है और उससे पहले भी एक जगह पर वहां पर भी जो सड़क है वो पूरी तरीके से धंस रही है, गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया। और यही वजह है कि धराली ग्राउंड जीरो पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी को पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर पूरी तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। नरेंद्र नगर में भी जो है इसी तरीके से पहाड़ गिरा था, जिसको जेसीबी की मदद से आधी रात में हटाया गया और वहां पर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें फंसी हुई थी। तो फिलहाल उत्तरकाशी के पूरे इलाके में लैंडस्लाइड का दौर लगातार जारी है। पूरी रात इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होती रही है, इस वक्त भी बारिश हो रही है और इस वजह से जो पहाड़ हैं वो खिसक रहे हैं, जो लैंडस्लाइड है वो हो रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं और इसीलिए ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में
सेना को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उत्तराखंड के लिए ये बड़ी आपदा है। जिस तरीके से धराली में बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ, तमाम दुकानें, होटल, घर, होम स्टे ये सब बह गए, गाड़ियां बह गई, लोग बह गए, कई लोग मारे गए। अभी भी जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम और लैंडस्लाइड इसके बीच में बाधा बने हुए हैं। And we continue to get you the latest visuals of the relief and rescue efforts and the updates as well. Bear in mind, nearly 200 people have been rescued so far, but the rescue efforts have been severely hampered by heavy rains and, more importantly, the key access route to the disaster site getting washed away. So it is all now dependent upon helicopters and airlifting heavy machinery that will clear all that debris that you're seeing on your screens. They need to be cleared, and they need heavy machinery for it, which is said to be airlifted. The Indian Army is on standby with 2 of its helicopters, including the Chinook helicopter, even as they continue to bring you those visuals of that access route that has been that has been cut off, and that is hampering the rescue and relief efforts. So bear in mind, the next 24 to 48 hours is going to be extremely crucial. There is an alert from the Indian Met Department for more rains in the region. Keeping with the climate crisis, Himachal Pradesh remains severely affected by the ongoing monsoon of the year 2025, with heavy rainfall triggering widespread damage to life and infrastructure. A total of over 300 roads, including National Highway 305, are blocked due to landslides and flash floods. Additionally, 236 water supply schemes and over 100 distribution transformers were reported to be non-functional. 184 fatalities have been recorded so far, of which more than 100 were directly attributed to rain-related causes such as landslides, flash floods, cloudbursts, drowning, electrocution, and other weather-triggered incidents. टांगनी गांव की देख रहे हैं, जहां किन्नौर कैलाश के पहाड़ों में बादल फटने के बाद नाले में भयंकर बाढ़ आई है। Another 81 people lost their lives in road accidents caused by damaged roads. Meanwhile, incessant rains in Varanasi have brought life to a standstill. The Ganga river has swelled up and it's flooded low-lying areas. The floodwaters have inundated the famous Dashaswamedh Ghat. Authorities have cautioned people against going near the river. All 80 ghats in Kashi have been closed, including the Manikarnika Ghat, Assi Ghat, and others. Several hotels along the river banks have also been submerged. A special unit of the police, the Jal Police or Water Police, has been involved in riverine operations, flood rescue, and disaster management after being deployed in the area. Strict instructions have been issued to boat operators to not run boats. According to the authorities, 70 meters is considered the safe water level, but the Ganga now has crossed the danger mark, reaching 72 meters. Things may worsen further as the Indian Met Department predicts more rain
in Varanasi. हम इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हैं। आमतौर पर यह घाट बहुत बड़ी श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहता है। यहीं पर लोग स्नान करने आते हैं, शाम को यहीं पर गंगा आरती होती है और ये तमाम नाव गंगा में विचरण करती हुई नजर आती हैं। लेकिन बाढ़ का आलम यह है कि पूरे का पूरा दशाश्वमेध घाट इस वक्त पानी की जद में है। पुलिस चौकी, एसटीपी, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट समेत सभी 80 घाट पानी में जलमग्न हो चुके हैं। नाव के संचालन को बंद कर दिया गया है और लगभग वाराणसी की 50,000 की ऐसी आबादी है जो इस बाढ़ की त्रासदी को झेल रही है। तमाम गंगा के किनारे आने वाले मंदिर हो, आम कस्बे हो, कॉलोनियां हो, वो पानी में डूब चुकी हैं और गंगा का वेग और प्रवाह कितना तेज है वो हम आपको यहां से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां जो सीढ़ियां थी वो लगभग गायब हो चुकी हैं।